make a good public opinion regarding the one election, one nation policy. So let's have a little bit discussion over the pros and cons of it. For this, I would like the team that is in favor of this program, One Nation, One Election, to provide some introductory sentences. So who is going to come forward by giving the introductory statements? Good afternoon, everyone. My name is Shahnaz Fatima, coming from 8th Standard, and I am representing Srinivasa Ramanujan House. We are debating in the favor of one nation, one election. This issue is important for me as whenever the date of election is announced, no new thing can happen for a month or two. Be it a state or national government, be it welfare or healthcare can be announced. Because these election commission are believed that such schemes are announced for their popularity. That's why it sets a model code of conduct. State election is held, nothing new can happen for a month or two. When the national election is held, nothing new can happen for a month or two. That's why India is still referred to as a developing country, while as the other countries such as Japan and USA are developing countries. Because India lost a few months in a year. That's why India is still referred to as a developing country. Thank you. From William Shakespeare House and Bipin Chandra House. So who is going to just release the introductory statement? Are you going to release it? Assalamu alaikum and good afternoon to you all. My name is Sakina Kausar and I'm representing Bipin Chandra House with my team member Fazlullah Najafi and Munawar Hussain. So basically we are debating on one nation, one election against the motion. So as Shehna said that our country, India is just a developing country, and she said that one nation, one election can reduce the cost. But economy arguments, we have not get any proof that one nation, one election can reduce the cost. Just because if all the elections are held at the same time, we need 3 times more EVM and VVPAT machines. And S.Y. Qureshi said that we need 40 lakh more EVM machines, which financial and logistical. This will have a huge financial and logistical impact on our government. Then how could she said that the one nation, one election can reduce the cost? मैम, जैसे कि सकीना ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन की वजह से कॉस्ट एफिशिएंसी वो कम होता है, मगर मैंने पहले टॉपिक में इसके बारे में कोई बात ही नहीं की कॉस्ट एफिशिएंसी के बारे में. मैंने बोला कि जब इलेक्शन कमीशन होती है, इलेक्शन की जो टाइम होती है उसमें ज़्यादातर लोग कोई भी नया स्कीम को इंट्रोड्यूस नहीं करते, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उस पर ये बिलीव करता है क्योंकि इस वक्त कोई भी स्कीम इंट्रोड्यूस करने की वजह से कोई किसकी फेवर में हो सकता है या अगेंस्ट में हो सकती है. इसमें मैंने कोई कॉस्ट की बात करी ही नहीं फिलहाल. Honorable juries, respected teachers, and my dear fellow students, good afternoon. My name is Muhammad Ali, and my teammates today are Sanya from class 5th and Asya from class 9, and we are here to present our thoughts on one nation, one election. Today we are speaking about the motion of the debate. So before initiating to the points against one nation, one election, there is no doubt to the destruction of federalism and autonomy of states. Federal structure where states have the right to function independently, holding elections simultaneous elections could undermine the federal spirit, as it might lead to a centralizing influence weakening the autonomy of states. Often states and national and state elections often revolve around different issues. Forcing them happen together may overshadow states and state issues with national concerns, diluting local governments. One more important point is that it is practically and constitutionally challengeable. Implementing simultaneous elections requires significant changes to the constitution, especially articles related to the terms of legislature and the dissolution of assemblies. This process may involve complex legal challenges. Respected teachers, esteemed judges, and fellow debaters,
Today I stand in strong support of the motion One Nation and One Election. So, One Nation, One Election is not just a logistical change. It is a profound step towards enhancing the efficiency, stability and engagement of our democratic process. By saving resources, increasing voters' turnout and ensuring stable governance, we can create a more effective and representative democracy. स्टेबिलिटी के बारे में बोला उन्होंने, बट वी ऑल नो दैट वन नेशन वन इलेक्शन इज नॉट अ न्यू कंसेप्ट. इट हैड इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1952 टू 1967, बट ये कंटिन्यू नहीं हुआ. क्यों ये कंटिन्यू नहीं हुआ? आसिया, आपने बताया कि एक बार ये फेल हुआ था. फेल होने की कई चांसेस है. क्या पता बीच में इनके जो गवर्नमेंट्स की जो पार्टी होती उन्होंने बीच में छोड़कर कहीं दूसरे पार्टी में चले गए हो तो इसकी रीजन बहुत कुछ हो सकती है. कोई पार्टी छोड़कर कोई दूसरे पार्टी में गए हो, इसकी वजह से गवर्नमेंट जो है वो डिसॉल्व हो गई हो, ये भी तो वजह हो सकती है ना. और उस वक्त इंडिया इतना भी डेवलप नहीं था, इसलिए ये भी डिसॉल्व हो सकता है. आज फातिमा ज़हरा ने स्टेबिलिटी के हिसाब से कहा था, स्टेबिलिटी कहा था, तो गवर्नमेंट जो उस वक्त जो गवर्नमेंट जो है वो अनस्टेबिलिटी की वजह से हुआ था. अनस्टेबिलिटी की वजह से वो गवर्नमेंट कंटिन्यू नहीं हुआ था. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इट. Nation one election, the top party is more likely to win at both states and at the center. A study in 2015 by IDFC Institute that shows that if elections occurs together, then there is a 77% chance that the top party will rule both in the states and at the center. But if these elections held in 6 months apart, then this percentage drops to 61%. Now the question over here is why there will be a sudden change in their choice within just 6 months. Well, as it turns out, sometimes voters have second thoughts, sometimes they regret the first choice, or sometimes they are not as impressed by the party as they were right before the election. Let's take Bihar as an example. In 2014, 41% of Bihar voted for the parliament elections for BJP. But fast forward to 2016, for the state elections, that number fell down to just 36%. Do you see this? If both these elections held simultaneously, then there is a very high chance based on this 2014 data that BJP might have kept that 6% vote, or perhaps they would have even won the state assembly election. अभी आप लोग जितने भी जो बात कर रहे थे वो आप उनके अगेंस्ट में बोल रहे थे. तो मैंने ये पूछा कि इंडिया में मतलब ऐसा नहीं, पहले ऐसा ये फेल हुआ था एक बार, तो इंडिया में क्यों फेल हुआ? फेल आपने तो हमसे पूछा कि क्यों फेल हुआ था, क्या रीजन थी, तो हमें ये बताना था कि इंडिया में सिमिल्टेनियस इलेक्शन, आज तक बड़े बड़े इलेक्शन यहाँ पर जैसे कि स्टेट इलेक्शन, जनरल इलेक्शन हुए, तो वन नेशन वन इलेक्शन क्यों नहीं हो सकते? तो जैसे कि आपने बोला कि वन नेशन वन इलेक्शन क्यों नहीं हो सकता, राइट? तो वो अब सोचो जो इलेक्शन होते हैं वो 5 साल के लिए होते हैं. मान लो फ्रॉम 2029 अगर वन नेशन वन इलेक्शन जो इम्प्लीमेंट हुआ इंडिया में, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल इज कर्नाटका. मान लो 2028 में कर्नाटका का जो इलेक्शन होगा, राइट? फिर पहले एक बार कर्नाटका में इलेक्शन हो गया, लेकिन 2029 में जो है कर्नाटका में फिर इलेक्शन होना पड़ेगा. क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ अंडर द वन नेशन वन इलेक्शन कर्नाटका को फिर से इलेक्शन लड़ना पड़ेगा. बट ठीक जो 2034 में जो है 5 साल बढ़ जाएंगे एंड द वन नेशन वन इलेक्शन जो कर्नाटका जो 5 साल है वो खत्म हो जाएगा. बट लेट्स अज्यूम दैट कर्नाटका का गवर्नमेंट 2032 में फॉल हो गया, लेकिन उस दो साल जो बच गए ना, तो उसमें क्या करेंगे? वन नेशन वन इलेक्शन को तो ला दिया, लेकिन क्या करेंगे उस 2 साल में? क्या आपने कर्नाटका का एग्जांपल दिया, 2032 में अगर ये ब्रोक डाउन हुआ, डिसॉल्व हो गया गवर्नमेंट, तो उस वक्त हमें वन नेशन वन इलेक्शन के वक्त जो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, उस वक्त हमें केयरटेकर गवर्नमेंट को भी इलेक्ट करनी चाहिए, ताकि अगर बीच में गवर्नमेंट डिसॉल्व हो गए, ताकि उस जगह पर कोई दूसरा गवर्नमेंट जो है वो निकल सके. तो वन नेशन वन इलेक्शन का पॉइंट कहाँ पे आता है? यहाँ पे तो 3 बार इलेक्शन आ रहा है, क्योंकि पहला 2028 में इलेक्शन हुआ ना, फिर 2029 में अंडर वन नेशन वन इलेक्शन फिर इलेक्शन हुआ, 2032 में फिर से इलेक्शन हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट डिसॉल्व हुआ था ना, फिर 2034 में फिर से इलेक्शन होगा. देन वेयर इज द पॉइंट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन? फिर से इलेक्शन होगा नहीं, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन में ये होता है कि जो स्टेट और जनरल मेंबर होते हैं उनको हमें साथ में चुनना है. इस वक्त साथ में हम एक केयरटेकर गवर्नमेंट को भी चुने, पैसा तो वहीं पर सेम खर्च होगा ना, वही तो होगा ना, के लिए इलेक्शन लड़ना पड़ेगा ना.
निकालेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब ये नहीं है कि एक केयरटेकर गवर्नमेंट पहले से निकाले। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि स्टेट इलेक्शन और जनरल इलेक्शन को साथ में दिया जाए। वही तो प्रॉब्लम है ना, जनरल इलेक्शन और स्टेट इलेक्शन को साथ में रखना। अगर कर्नाटक का एक अलग गवर्नमेंट होता तो 2020 में उनका इलेक्शन होता है till 2020, 29, 30, 31, 32 till 33। लेकिन अगर जनरल इलेक्शन और स्टेट इलेक्शन का साथ में होता, इसलिए 2020 में इलेक्शन हुआ था और 2029 में अंडर द वन नेशन वन इलेक्शन उनको फिर से इलेक्शन लड़ना पड़ेगा ना, फिर से इलेक्शन हुआ फिर। Elections at regular intervals ensure that governments remain accountable to people. The more frequent elections at state levels can force government to focus on local issues, avoiding complacency. Local level elections allows voters to assess the performance of their state government separately from the national government. Simultaneous elections could blur the lines between national and state leadership, limiting the accountability. So, first and foremost, let us consider the financial implication. Conducting the multiple elections in a staggered manner incurs tremendous cost. Estimates suggest that we could save thousands of crores by holding elections simultaneously. These funds could be redirected towards essential services like education, healthcare, and infrastructure development, ultimately benefiting the citizens. Hello. Fatima Zahra said that organizing one nation, one election reduce our cost. Am I right? But don't you think in that 5 years the election will be a do or die situation? I mean, the politician will spend all the money he has just because he knows that uska jo next opportunity hai wo after 5 years आएगा. So how can you say that it will reduce our cost? जो कोच जो होता है वो लोग जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो हर 5 साल के बाद उस कोच को जो है उस सिटीजन के लोगों के लिए उनके डेवलपमेंट के लिए वो इस्तेमाल करेंगे, ना कि वो उन्हीं के लिए खर्च करेंगे। डेवलपमेंट के लिए कहाँ यूज करते हैं? वो सब वोट्स खरीदने के लिए वो सारी उस चीज़ों में यूज करते हैं ना पॉलिटिशियंस। जैसा अली ने बताया कि पॉलिटिशियन अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, आपको कैसे पता है कि पॉलिटिशियन अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे? कैन यू रिपीट द क्वेश्चन प्लीज? आपको कैसे पता, आप ये कैसे बोल रहे हो कि पॉलिटिशियन अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं? हम सब रोज देखते हैं, जब भी इलेक्शंस होते हैं तो हम देखते हैं, इसीलिए मैं बोल। इलेक्शन कैंपेन में लोग अपने लोगों को अपनी तरफ बुलाने के लिए और अपने लोगों को वोट करने के लिए बुलाते हैं, तो ये फायदे के लिए थोड़ी हुआ। और एक तरफ से वो अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, वो तो इलेक्शन गवर्नमेंट तो बनाना है ना, फिर वो इलेक्शन लिमिट से ज्यादा पैसा खर्चते हैं, इसीलिए When elections are held frequently, voters often experience fatigue, leading to lower turnout rates. By consolidating elections, we simplify the process for voters, making it more likely that they will engage and exercise their right to vote. Thank you. But my point of view is certainly different from Fatima Zahra. Holding elections less frequently may reduce the frequency with which voters engage with political process, leading to lower political participation. In long term, voter turnout may decline as the excitement or motivation to participate regularly may diminish with fewer elections. My opinion against one nation, one election is to implement one nation, one election. Change would also be required in the constitution and other legal frameworks. One nation, one election need a constitutional amendment. Thank you. Or government officials were conduct so if there was different time election, they will get disturbed from their work. Their government official take duties of 1 or 2 days, and officers can take more on one election. Good afternoon, everybody.
I want to say that the rules that stop governments from launching new programs during elections will apply only once every 5 years, so that the government can focus more on working for the people and also for the development of the country, as India is a developing country. So it is very beneficial for us and results in favor interruption to descriptions. Thank you. वन नेशन वन इलेक्शन के लिए ये है कि अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन के बगैर दूसरे हमारे नॉर्मल इलेक्शंस करें 60,000 करोड़ हमारे खर्च करते हैं, लेकिन अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन करेंगे तो हमारे 2,000 करोड़ बचते हैं और हमें सिर्फ 50,000 करोड़ ही खर्च होते हैं, तो हम इस 2,000 करोड़ को दूसरे बेनिफिशियल कामों में भी लगा सकते हैं। Good afternoon, everyone. The worst is happening with the local body election. They will have to conduct within 100 days of general and state election. Then again, the question arises: one nation, one election, or one nation, one election, or one nation, two election. जैसे लोकल बॉडी इलेक्शन जनरल स्टेट इलेक्शन के बाद हो रहा है, तो हाउ कुड यू से वन नेशन वन इलेक्शन जबकि यहाँ वन नेशन टू इलेक्शन का पॉइंट आ रहा है। The second point that I want to make here, and that is an important point, that is need to educate the voters. The last time India held simultaneous election was in 1960s. So an entire generation is not even familiar with the idea. How do you educate them? How do you explain why they are voting twice or thrice? First, you would to say this vote is for Lok Sabha election, this vote is for state assembly election, and finally this vote is for local body elections. It could get complicated and it's not sensible at all. In one nation, one election, there is a complexity in implementation. Synchronizing election for various levels of government, central, state, and local, requires significant logistical coordination. This could lead to administrative challenges, particularly in a diverse and geographically large country like India. I thank our fellow judges, Ma'am Nazrun Abul Sir, who has taken time to have this accumulated. So, those who have, like this is, all the time we are saying that winning and losing is part of the game. So don't feel disheartened. And next time you have to be very, prepared. Like we have all, last time also we said that you have to be thoroughly prepared for this, okay? You were, seem to be little underprepared. You need to, study more about the topic. And in future, hopefully you will be, more proactive, and all the contestants will be more proactive. So here is the moment of truth that the third position goes to William Shakespeare House. Huge round of applause. Huge round of applause for William Shakespeare House. And second position goes to Ramanujan House. And guess the first one. So, Bipin Chandra House is the winner of this debate. See, there are certain criteria. So many criteria are there. Like the content. What is your content? And then the body language, assertion frequency, and then confrontation of question-answer session. Got it? And also we have a consolation prize for SN Bose. SN Bose House, you need to be more proactive next time, okay? Got it? So, like we have said that winning and losing are part of the game. Thank you so much. That's how we conclude today's
debate competition. Thank you and thank you so much.